the next topic, printer. A printer is an external hardware output device that takes the electronic data stored on a computer or other device and generates a hard copy of it. So you know already you know that you are printing your experiments in the lab. So what you are doing is you are downloading the programs and uh, you go to the different software, that is your word processing software, Microsoft Word. Then and from that you go and take the print command, give the print command, and it will print it. For example, if you create a report on your computer, you could print several copies to hand out at a staff meeting. Printer are one of the most popular computer peripheral and are commonly used to print text and photos. Types of printer, different types of printer are there. Below is the list of all the different types of printer. Today, the most common printer used with a computer are inkjet and laser. Normally, inkjet and laser we are using. Dot matrix we were using in 2000 till 2010. Dot matrix printer. So it is very cheapest printer. हम लोग उसको 50 रुपीज़ में रिफिल करते थे उसकी एंड 2000 प्रिंट होता था. तो यू कैन गेस द प्राइस ऑफ सिंगल पेज. मेरे ख्याल से कुछ पैसे हो जाएंगे. 50 रुपये में आपके कितने हो जा रहे हैं? 2000 पेजेस. तो एक पैसा आपका, एक पैसे में 4 पेज प्रिंट हो रहे हैं. मीन्स विद इन अ रुपीज, विद इन अ 1 रुपीज, 1 रुपीज में आपके 100 पेज, 100 से भी ज़्यादा यानी 400 पेज प्रिंट हो जाएंगे 1 रुपये में. तो दैट डॉट मैट्रिक्स इज वॉट क्वाइट चीप, वेरी cost effective dot matrix printer. So 3D printer used in all-in-one printer, dot matrix, inkjet, laser, LED printer, multifunction printer, plotter. Today we will not see the plotter. Thermal printer. So printer interface. There are a few different ways a printer can connect to and communicate with a computer, referred to as a interface. So how printer is connected to the computer is called what? Interface. Today, the most common connection types are by USB wired. And normally all the printer, if you see it is what USB. And some of them are what? Wi-Fi. Most Wi-Fi is also there in the printer. Below is a full list of cable and interface used to connect a computer to a printer. Cat5 cable is there, Firewire is there, then MPP 1150 parallel port, SCSI serial port, USB, Wi-Fi. So Firewire normally is for what? We have seen that it is for what? Very quick and heavy printing. If you want to print more number of pages, then Firewire can be used. What are the uses of printer? Each type of printer has different types of uses. Example of more frequent uses of printer include the following, like 3D printer, print tools or parts needed to build something. Okay, 3D printer आप लोग इसका वीडियोस मैंने निकाला नहीं, but there are many videos are available which can print what the tools and parts. That is not like a paper. You can print what the accessories, some and also you can print the toys. Also you can print through the printer. So print a replacement part for something that has broken. So some broken part can be printed and then that can be used. Print toys for the children. That is what just I have told. You can print the toys through the 3D printer. So inkjet printer, print copy of a document for school, print pictures on photo printer, and print receipt for purchase made online. So normally inkjet printer is used for this. Same use can be do for laser printer, but laser printer is not very fast as compared to inkjet printer. Quickly print hundreds of text documents or pages. Laser printer.
print hard copies of professional or legal documents. Normally, laser printer is used for what? To print more number of pages because it is quite fast. A laser printer was developed by Xerox. नॉर्मली हम लोग जो कॉपी करते हैं कॉपियर होता है वो एक्चुअली, तो जेरोक्स इतना फेमस हो गया कि हम लोग वो कॉपियर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कॉपी करना है अपने को तो बोलते हैं कि जेरोक्स निकाल लो। तो सक्सेस ऑफ एनी कंपनी इज व्हाट, कि वो ब्रांड को ही हम लोग, जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला नाम आता है, तो जबकि कोका कोला नहीं है ठंडा, ठीक है, तो वो उसने इतना पब्लिसिटी किया कि एवरीवन इज सेइंग व्हाट, ठंडा मतलब कोका कोला। हम लोग जब छोटे तो बोलते थे कि क्या, ठंडा मतलब थम्सअप, थम्सअप यानी ठंडा लाना मतलब थम्सअप लेकर आना, थम्सअप लेकर आ जाओ। तो similarly is what Xerox. Xerox is what company it is, and this Xerox company made this laser printer in the 1960s when the idea of using a laser to draw images onto a copier drum was first considered. Laser printers are still widely used in large offices as they are traditionally more efficient than inkjet printer. So most of the offices are using the laser printer. What are the advantage of laser printer? More cost effective than inkjet printers, increases productivity, high print speed, higher paper capacity, often expandable with paper trays, finishers. So there are a number of trays you can put in the laser printer, uh, and whereas in inkjet printer there are limit for to put the paper. There is a paper limit also in the inkjet printer. Grows with your business. What is the disadvantage of laser printer? May require short warm up times. Means it takes some time to start. If you start it, so it will take 1 or 2 minutes to start. Larger footprint, high voltage usage lead to small carbon emission. थोड़ा सा उसमें से कार्बन निकलता है, लेकिन that doesn't reflect in the print quality is good even if there is what some emission of carbon. लेकिन वो फिर जब ज़्यादा यूज़ होता है तो फिर बाद में वो दैट कार्बन इज व्हाट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद फिर आपके पेज पे आने लगता है, तो कार्ट्रेज आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है लेजर प्रिंटर में। Inkjet printers are one of the most common type of printer used in both professional and domestic setting. Developed in 1950s, inkjet printing technology is still hugely popular today due to its numerous advantages and minimal drawbacks. Inkjet is what very you see that it is very cost effective. Uh, if you go and check, you can get the printer in 2000 also, inkjet printer. But the problem is what, cost इसका यानी printer is very you can get the printer in very less cost, but printing cost is very high. एक प्रिंट करने के लिए आपने डॉट मैट्रिक्स में देखा था कि मैं बता रहा था 1 रुपये में आप 400 प्रिंट कर सकते हो, तो लेकिन वो आपका इंकजेट प्रिंटर आपको 5 रुपये में है ना, वो एक ही प्रिंट करके देगा। हाँ, और अगर ब्लैक एंड वाइट करना है तो 2 रुपीज, इट विल कॉस्ट 2 रुपीज। नाउ इट इज लो कॉस्ट इंकजेट प्रिंटर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। वो आपको कुछ 10,000 का मिल जा रहा है अभी वो नया, मगर उसका जो क्वालिटी है दैट इज व्हाट नॉट गुड। यू कैन नॉट प्रिंट अ फोटो आप उसमें लो कॉस्ट में नहीं प्रिंट कर सकते हो, यानी प्रिंट करेंगे बट क्वालिटी विल बी वेरी बैड। So inkjet printing technology is still hugely popular due to its numerous advantages and minimal drawbacks. Advantage is what, capable of producing photorealistic prints. So as compared to laser printer is what quite costly if you compare with the inkjet printer. If you bring the 2,500 rupees printer, you can print the photo at home. यानी वो 2,500 के प्रिंटर में भी आप 2,500 के प्रिंटर में भी बहुत अच्छी क्वालिटी का फोटो
प्रिंट कर सकते हो घर पे। सिर्फ क्या है, उसका कार्ट्रेज इज कॉस्टली। 2,500 का प्रिंटर है आपका, तो आपका 1500 से 2,000 का कार्ट्रेज आ जाएगा उसका। Practically no warm up time, and it start very fast. Small footprint. What is disadvantage? High running cost. Cost per page is what very high. Slow print speed. Sometimes produce erroneous empty cartridge warning. Prone to clogging. वेट प्रिंटिंग, यानी उसको सूखने को काफी टाइम लगता है। यानी एक बार वो प्रिंट होके आया तो इमिडिएटली उसको आप हाथ लगाएंगे तो वो क्या होगा कि इंक फैल जाएगी उस पर। तो थोड़ा सा उसको हम लोग पहले उसको ये करना पड़ता है, उसको सूखने देना पड़ता है। वेरेस इन द लेजर प्रिंटर वो इमिडिएटली जैसे बाहर आएगा यू कैन नॉट टच इट। तो दिस इज वन ऑफ द वेट प्रिंटिंग, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द इंकजेट प्रिंटर। Next is the dot matrix printer are the oldest established type of printer still available on the market. अभी भी यूज होता है dot matrix. Images and text are drawn out in tiny dots. इसमें आपका हेडर देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेडर के ऊपर डॉट रहते थे। अगर कॉलेज में रहते तो हम लोग कॉलेज में भी अभी अवेलेबल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेकिन अभी वो यूज में नहीं है, तो वो मैं दिखा सकता था वो डॉट। व्हेन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक्स एन इंक सोक्ड, तो उसके वो डॉट स्ट्राइक करता है, वो जो हेड है ना वो आपका एक रिबन आती थी, वो रिबन को हम लोग रिफिल करते थे। तो वो रिबन के ऊपर वो क्या करता था, डॉट स्ट्राइक करता था प्रिंट हेड। तो फिर वो स्ट्राइक करके फिर जैसे आप लोग ये टाइपराइटर देखे होंगे ना, टाइपराइटर टाइपराइटर कैसे वो टाइप करते हैं, तो वो ओल्ड टाइपराइटर था जो पुराना टाइपराइटर, तो बटन दबाओ तो वो जाके ऐसे टाइप करता था, एक एक वर्ड को टाइप करता था। तो सिमिलर टू दैट इट इज व्हाट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। So when a print head strikes an ink soaked cloth against the paper in the required pattern or formation. Advantage is what? Low initial unit cost, low running cost, low maintenance cost, able to perform in hot and dirty conditions. So this is what, lots of advantage of the dot matrix printer. Disadvantage is what? Low resolution printed output and noisy also. यानी जब ये आपका चलेगा प्रिंटर तो बहुत आवाज करता है, यानी पूरा लैब में जो है इसकी आवाज गूंजती थी जब प्रिंट होता था। तो दिस इज व्हाट क्वाइट नॉइसी, बट इफ यू चेक द एडवांटेज cost wise it is very convenient and effective. A3 printer capable of printing on A3 sheet. A3 printers are well suited to business and document and domestic setting which require large scale printing. Normally A3 तो आपका घर पे यूज ही नहीं होता है, बिजनेस में ही यूज होता है, क्योंकि A3 शीट जो है काफी बड़ी होती है। A3 printer often have option procedure, other size prints and have numerous input trays, simplifying the process. They are also available with both laser and inkjet technology. So A3 printer is available in both, okay, in laser also and inkjet also. Advantage: large print size, wider range of options, allow you to bring outsource print runs back in house. Disadvantage: what? Higher initial cost, large footprint. Next is the 3D printer. तो दिस इमेज यू कैन सी वन टॉय टॉर्टॉइस का, ये आपका एक इमेज बना हुआ दिख रहा है आपको, टॉर्टॉइस प्रिंट किया है उसमें। यू कैन सी दैट दिस इज द 3D प्रिंटर। सो थ्रू दिस 3D प्रिंटर टॉयस ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी प्रिंटेड। So one of the most exciting development in printing technology history, 3D printing is becoming more affordable for professional and domestic user. Modern 3D printers are capable of producing 3D objects and items using high quality resins. Advantage: 3D prints limitless possibility, capacity for full customization. Disadvantage: high initial cost, high resins cost, still developing
Still, it is what developing technology. What do you mean by this resins? Anybody know? It is a sticky, flammable organic substance, soluble in water. Ex, exu, uh, this is used for what making a toys. So this resins is what very costly, and this resins is used for making what 3D printing. So high quality resins is what required for printing the items in the 3D printing. This is all about printer and types of printer.